Hello students, I welcome you again in my lecture series of class MSc Semester 1 Botany. In the last lecture, we studied SPAC, that is Soil Plant Atmosphere Continuum. Now, in the continuation of that lecture, we are going to study today is stomatal mechanism. This topic is of plant physiology, unit first. Now we'll study students here what is stomatal mechanism, how it works. Okay. Now the modern concept based on potassium plus influx. Now here the gut cells disperse in the epidermal tissue synthesize malate which contributes to the enhancement of trigger needed for their opening. So what is happening here students? जो गार्ड सेल्स हैं एपिडर्मिस के दे सिंथेसाइज मैलेट ये जो मैलेट है ये क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है इन द एनहांसमेंट ऑफ ट्रिगर मींस शुरुआत कर रहा है ट्रिगर कर रहा है उसको नीडेड फॉर देयर ओपनिंग ऑस्मोटिक चेंजेस विद इन द गार्ड सेल्स रेगुलेट द स्टोमेटल मूवमेंट जो भी ऑस्मोटिक चेंज होगा कंसंट्रेशन का दैट विल रेगुलेट द स्टोमेटल मूवमेंट्स. Increase in solute concentration within the guard cells, water moves in from the adjacent cells. जब उसके आसपास के जब concentration बढ़ती है तो उसमें क्या होता है the adjacent cells results in opening of stomata. जब आसपास के cells जब stomata में उधर पानी होता है water moves तो opening of stomata होता है. Guard cells chloroplast, अभी हम guard cells का diagram में अच्छे से देख लेंगे कि guard cells में chloroplast present होता है, contains starch during the day and is degraded at night. क्योंकि during the day ही photosynthesis होती है and as a result of photosynthesis what is happening? Starch is forming there. So closed stomata and open stomata. Now osmotica in gut cells. It is accepted that opening of stomata was the osmotic effect of an accumulation of potassium ion salt and also in some sodium ion in guard cells. मतलब सोडियम और पोटेशियम के ऑस्मोटिक इफेक्ट के कारण हम इसके ओपनिंग को देख रहे हैं. ठीक है. Now potassium is discovered in guard cells of open stomata of several species including CAM, crassulacean acid metabolism plants where stomata open in the नाइट. जब हम आगे इसको फिजियोलॉजी के लाइट एंड डार्क रिएक्शंस वगैरह पढ़ेंगे उसमें डिटेल में क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे. सोडियम प्लस इज फाउंड इन स्पीशीज ग्रोइंग इन सैंड क्योंकि सैंड मतलब जहाँ थोड़ा सा सॉल्टी कंडीशंस होंगी वहां पर क्या होगा आपको ऐसे ये तो अपने को समझ में ही आ रहा है वहां पे सोडियम कंडीशंस में प्रेजेंट ज्यादा होगा. लाइट डिपेंडेंट मतलब लाइट रिएक्शन एंड लाइट इंडिपेंडेंट मतलब डार्क रिएक्शन. मतलब जो लाइट की रिएक्शन हो तो मतलब इट इज डिपेंडेंट ऑन लाइट एंड डार्क रिएक्शन मतलब इट इज नॉट एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लाइट. In light reaction, the chlorophyll molecules in the plant absorb an energy from the sunlight. जो कि मैंने आपको बताया photosynthesis. What is happening? It has energy is absorbed from the sunlight and synthesize energy-rich molecules such as ATP and reduce coenzymes NADPH. Now, stomatal transduction in guard cells. Guard cells, where it is located? It is located in the leaf epidermis and pairwise. दो होती है बीच में स्टोमा होता है वे हम आगे डायग्राम में देखेंगे. Surround the stomatal pores which allows carbon dioxide influx for photosynthetic carbon fixation. ठीक है. मतलब guard cells कहाँ located in the leaf epidermis pairwise होती है डबल होती है. Okay. Signal transduction mechanism in guard cells integrate a multitude of different stimuli to moderate aperture. Means what is happening here? This stimuli means what? Light भी हो सकती है. Stimulus means photo. तो वो उसको modulate aperture को modulate करती है. So here what is here? Here what we are studying? Stomata open in response. मतलब light. तो light is what here? It's stimuli here. Now in response to drought मतलब ड्राई कंडीशंस हो जीरिक कंडीशंस हो स्ट्रेस कंडीशन में प्लांट क्या करता है एक हार्मोन सिंथेसाइज करता है दैट इज कॉल्ड एब्सिसिक एसिड ABA. इट ट्रिगर्स द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा.
So which hormone is responsible for triggering the closing of stomata? That is the abscisic acid. Guard cell has become a system for dissecting early transaction mechanism in plants. Now, guard cells के द्वारा हम ये पहचान सकते हैं the signal, they can give the early signal transaction mechanism in plants. The mechanism, when water is lost, the guard cell decreases in volume. Okay, जब पानी निकल गया है तो उनका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है एंड देयर वॉल स्ट्रैंटन हो जाती है एंड अपर्चर क्लोज हो जाता है. अभी हम डायग्राम से भी इसको अच्छे से समझ लेंगे. नाउ व्हेन गार्ड सेल्स अकम्पनीड बाय एपिडर्मल सेल्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट, यहाँ पे गार्ड सेल के आसपास जो एपिडर्मल सेल्स होती है दे आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एपिडर्मल सेल्स. और जो ये डिफरेंट एपिडर्मल सेल्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं? दे आर कॉल्ड द सब्सिडरी सेल्स और द accessory cells. Now this is a very clear diagram. Here we can clearly find out what is happening in stoma opening and stoma closing. This is what? Aperture, stoma. This is the thickening of the guard cells wall. This is two guard cells. Okay. Now in the guard cell अभी अपने लास्ट में पढ़ा था ना, उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है. ये वाटर इसके अंदर है, ठीक है, और ये वैक्यूल है और इसके आसपास क्या है? ये एपिडर्मल सेल्स है. ठीक है. अब इसके अंदर क्या हो रहा है? पानी पूरा भरा हुआ है, ये पूरा स्वॉलन हो चुका है, फूल गया स्टोमा. जब पानी का प्रेशर तो इट इज ओपन हियर. नाउ हियर आपने पता ना वॉल्यूम में डिक्रीज हो जाता है, ये स्क्वीज हो जाता है, ये पानी इसमें से बाहर निकल गया, आयंस बाहर निकल गए एंड द गार्ड सेल्स श्रंकन. यहाँ पे गार्ड सेल्स क्या हो रही है? स्वॉलन हो रही है. यहाँ गार्ड सेल क्या हो रही है? श्रंकन हो रही है. सो दिस इज अ वेरी क्लियर डायग्राम विच कैन शो द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ. नाउ कैन स्टडी. जब अभी हम पढ़ रहे हैं कि क्या हो रहा है ये स्टोमेटा एंड ऑल, तो अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइप्स ऑफ स्टोमेटा. Stomata are mostly classified on the basis of the number and the characteristic of the surrounding subsidiary cells. There are 5 types of stomata: anemocytic, anisocytic, diacytic, parasitic and graminaceous. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे anemocytic. In anemocytic type of stomata, they are surrounded by epidermal cells. Here they are surrounded by epidermal cells. You can see here the stoma, the guard cells, and they are surrounded by epidermal cells. Here also an example is citrulus. Here it is anisocytic stoma. Stoma is surrounded by anechocytes, 3 subsidiary cells, and their example is cruciferous type. Here you can see here. This is 1, 2, and 3 subsidiary cells, and stoma and the guard cells. Okay, and they are unequal size. Okay, the diacytic stomata is surrounded by a pair of subsidiary cells. They are called caryophyllous type. And there, here you can see. Okay, this is diacytic type of stomata. This is parasitic type of stomata. It is surrounded by 2 subsidiary cells. Here you can see here, which they are parallel to the stomatal pore. ये क्या है? Parallel है, एक दूसरे के parallel है. वहां पर वो दोनों opposite थे. Now they are parallel and they are called the rubiceous type of stomata. This is graminaceous, means graminea as the family indicate. ई स्टोमा, ये देख रहे हैं आप, ये स्टोमा किससे सराउंडेड हो रहा है? डम्बल शेप्ड गार्ड सेल्स. ठीक है, ये यहाँ पर तो बीच में नैरो है, यहाँ पर थिकन हो रही है और आसपास क्या है? फिर 2 एपिडर्मल सेल्स. ओके, सो एग्जांपल इज ग्रामिनी एंड साइपोरेसी. सो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा पूरा स्टोमेटल मैकेनिज्म, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड टाइप्स ऑफ स्टोमेटा. सो this was all about the stomatal mechanism, the types of stomata they are found. So thank you students. Stay home, stay safe. Thank you.